Hello dear student, how are you? Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you how to find question number 4 of class 10, chapter number 7, coordinate geometry. Which one? Coordinate geometry. Now, okay. See, find the ratio in which the line segment joining. So this is our line segment. Our line segment A, comma B. Find the ratio in which the line segment 3, comma minus 10. Which one? 3 minus 3 comma 10 and B 6 comma minus 8 is divided by point this point P minus 1 comma 6. ओके सो इसको हम सेक्शन फॉर्मूला से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला सेज x इज इक्वल टू m2 x1 plus m1 x2 divided by m1 plus m2. Okay. Now, what is x? Here x is equal to minus 1. So, putting the value of x minus 1 is equal to what is m1? I don't know. This is my m1 and this is my m2. Okay. So, m1 into 6. m1, okay, m1 into 6 and m2 into minus 3. So, m2 into minus 3 plus m1 into 6 divided by m1 plus m2. Divided by what? m1 plus m2. तो इधर m1 plus m2 डिवीजन में है, जिसको हम यहां से यहां ले जाए तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन. तो ये हो गया माइनस 1 इंटू m1 plus m2 is equal to minus 3 into m1, that is, oh sorry, minus 3 into m2. So minus 3 m2 plus 6 m1. How much? 6 m1. Now multiplying minus 1 in this side, minus 1 into m1 is equal to minus m1, minus 1 into m2 is equal to minus m2 is equal to what? Minus 3 m2 plus 6 m1. Okay. m1 को एक तरफ ले लेंगे, m2 को एक तरफ ले लेंगे, तो ये हो गया माइनस m1 माइनस 6 m1 is equal to minus 3 m2 plus minus m2 become plus m2. So simplifying this, we have minus 7 m1 minus 6 minus 1 means minus 7 m1 is equal to minus 3 plus 1, that is minus 2 m2. Now the ratio m1 divided by m2, m1 divided by m2. So minus 7 m1 divided by ये m2 जो यहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा तो हो जाएगा डिवीजन. ओके, तो ये हो गया m2 इज इक्वल टू ये माइनस 2 तो माइनस 2 यहाँ पे रहेगा ही. अब यहाँ से 7 को निकालना है, 7 मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन. ओके, लिखता हूं मैं आगे. ये हो गया m1 by m2 is equal to minus 2 divided by minus 7. Now minus minus cancel. So we have m1 by m2 is equal to m1 divided by m2 is equal to 2 by 7. So our ratio, our required ratio, okay, जो हमको पूछा गया है ना, फाइंड द रेशियो. रेशियो क्या हो गया? रेशियो हो गया 2:7. तो हम लिखेंगे रेशियो और रिक्वायर्ड रेशियो m1 m2 is equal to 2:7. 2:7. ओके. तो वीडियो कैसा लगा आप जरूर से बताइए और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.